במלחמה יש עליות ומורדות. יש הצלחות ויש גם רגעים מורכבים. אי אפשר לברוח מתחושת החמיצות שמלווה את כולנו ביום הזה. ההסכם עם איראן הוא הסכם רע לישראל ולעולם החופשי כולו. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, אסור לנו להשלים עם מציאות שבה המשטר הקיצוני בטהרן ממשיך להתקדם לעבר היעד הזה. יחד עם זו חשוב לומר ביושר, המערכה הממושכת שניהלנו יחד עם ארצות הברית בהובלתו של הנשיא טראמפ, המערכה המשותפת הזאת נגד איראן הניבה הישגים משמעותיים מאוד. המבחן המיידי שלנו כעת הוא בלבנון. המטרה היא להפוך את ההישגים המשמעותיים שהצבא שלנו השיג והלוחמים הגיבורים שלנו השיגו, אנחנו צריכים להפוך את זה למציאות ביטחונית חדשה ויציבה עבור תושבי הצפון. לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של ה-6 לאוקטובר בגבול הצפון. לכן, ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת ביטחון, על חופש פעולה ביטחוני מלא מול כל הפרה, כל איום וכל ניסיון של התבססות מחדש של חיזבאללה. צה"ל חייב לקבל את כל הגיבוי הנדרש כדי להמשיך להרחיק את האיום ולהבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון לאורך זמן. אנחנו על זה, תסמכו עליי. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat semakin dekat. Namun Shehbaz menyebut ada sejumlah pihak yang mencoba sabotase perdamaian. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengatakan teks akhir kesepakatan damai antara Iran dan Amerika Serikat telah berhasil dicapai. Saat ini Pakistan sedang bekerja sama dengan kedua belah pihak mematangkan langkah-langkah selanjutnya. Sharif memberikan peringatan keras terkait adanya kampanye disinformasi yang sengaja digulirkan pihak-pihak tertentu untuk menyabotase potensi kesepakatan damai ini. Sharif menegaskan di tengah upaya mediasi yang intensif oleh Pakistan, pihaknya menyadari ada upaya pihak luar yang ingin menggagalkan perjanjian tersebut melalui berita bohong. Pakistan kini fokus mendampingi kedua negara untuk mematangkan proses berikutnya. Sharif menegaskan perdamaian di antara kedua belah pihak belum pernah berada di posisi sedekat ini sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Serangan Hizbullah tersebut merupakan serangan balasan atas serangan Israel sebelumnya. Pejuang Hizbullah terus gempur pasukan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Perlawanan pejuang Hizbullah menargetkan pasukan Zionis Israel yang tengah melakukan agresinya di Lebanon Selatan. Rentetan roket Hizbullah juga menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Tak hanya roket, pejuang Hizbullah juga melancarkan serangan menggunakan bom mortir ke pasukan Zionis Israel. Serangan pejuang Hizbullah juga merupakan serangan balasan yang dilakukan oleh Israel di Lebanon Selatan yang menyebabkan ribuan warga tewas. Di tengah gencatan senjata yang diperpanjang, Hizbullah dan Israel terus melakukan serangan. Zionis Israel mengklaim telah menghancurkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah di Lebanon Selatan. Zionis Israel merilis serangan udara yang menargetkan peluncur roket milik pejuang Hizbullah. Sebanyak 5 peluncur roket Hizbullah dihancurkan oleh Zionis Israel. Serangan ini untuk melancarkan agresi militer Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Dalam satu malam, pasukan Zionis Israel menyerang 3 permukiman di Lebanon. Ledakan dan kepulan asap terlihat di langit kota Var Jos, Lebanon Selatan. Secara bertubi-tubi, pesawat nirawak Israel menghantam kota kecil ini. Serangan juga dilancarkan ke kota Var Ruman dan kota Var Tepnit. Akibat serangan, sejumlah bangunan dan fasilitas rata dengan tanah. Sebelum serangan dilancarkan, militer Israel mengeluarkan peringatan agar warga segera mengungsi. Israel mengklaim telah menargetkan seluruh wilayah
dan infrastruktur milik Hizbullah. Lebih dari 100 hari perang melawan Iran, sebanyak 51 pesawat Amerika Serikat dari berbagai jenis hancur usai pecah perang melawan Iran sejak 28 Februari lalu. Dan berikut total pesawat Amerika Serikat yang hancur. Pesawat Amerika Serikat yang hancur terdampak serangan oleh pasukan Iran, diantaranya pesawat tempur F-15E sebanyak 4 unit, pesawat siluman F-35 Lightning II sebanyak 1 unit, dan pesawat tempur A-10 Thunderbolt juga 1 unit. Selanjutnya, pesawat yang hancur ditembak jatuh Iran yakni 1 unit E-3 Sentry AWACS atau pesawat jenis intai peringatan dini sekaligus pusat kontrol Komando Udara Amerika Serikat. Selanjutnya, 2 unit pesawat angkut Super Hercules Amerika Serikat jenis C-130C juga hancur di wilayah Iran saat operasi penyelamatan pasukan Amerika Serikat di wilayah Iran. Selain itu, pesawat angkut BBM atau pesawat tanker jenis KC-135 Stratotanker sebanyak 8 unit hancur pada saat operasi di Timur Tengah. Berlanjut ke helikopter AS yang juga jadi korban serangan Iran, salah satunya helikopter Black Hawk jenis HH-60W sebanyak 2 unit. Dan yang terbaru, 1 unit helikopter AH-64 Apache yang diserang oleh drone Shahed di Selat Hormuz. Selanjutnya ada helikopter CH-47 Chinook sebanyak 2 unit yang hancur pada serangan drone Iran di pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Tidak hanya pesawat tempur dan helikopter, drone atau pesawat nirawak AS juga menjadi sasaran Iran. Salah satunya drone MQ-9 Reaper sebanyak 24 unit ditembak jatuh. Selain itu, ada drone MQ-1 Predator sebanyak 2 unit dan drone MQ-4C sebanyak 2 unit. Total pesawat Amerika Serikat yang hancur terkena serangan Iran selama perang sebanyak 51 unit. Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the Strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out for the most part. We have a lot of lanes right now already. Mr. President. So I think sometime in the very near future. Yeah. Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into effect? No, it doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect. Monsieur Macron, quel engagement êtes-vous prêt à prendre au nom de la France dans le détroit d'Ormuz? Vous avez parlé du porte-avions Charles de Gaulle. Mr. President, what do you expect from France and Well, I would love them to do that. I don't think we're going to need much help because we have an agreement where it's going to be open. And it's toll-free. We had a little argument on that. It's toll-free. So I don't think we're going to need much help. But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up here from a few countries. It'd be a great country to do it because you never know what happens. But I think it's going to be open, and I think it's going to be free sailing